my channel Nivana Mama, and today I'm going to show you how you guys can make your home a safety proof home for your kids, especially for those children who have just started crawling or have just started walking. So let's quickly jump in because I'm going to share some really useful tips for you guys. So let's start. So before we start, I am not a professional, I am just a new mom. So, whatever I will be giving you tips, that will be based on my experience and how I am keeping my home safety proof for Ivan. So, let's start. So, the first tip that is very important is removing all the items, especially from your living room, all the decor item that you can think that can be dangerous for your kids, especially all the flower vases, glassware, decor item, and all those things that are kept low, that is in the floor. So please move them to some other room where your kid cannot reach, or pack it and keep it somewhere, because it can be dangerous. क्योंकि एक बार बच्चे क्रॉल करना शुरू कर देते हैं तो उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी आ जाती है टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग इन द हाउस. तो कई बार हो सकता है वो अपने ऊपर गिरा ले, सो दैट कैन बी डेंजरस. सो फर्स्ट थिंग, go and remove all this thing. So what we did, we had lot of decor items. हमने सब कुछ पैक करके रख दिया. We had one rack, डेकोर रैक, जिसमें काफ़ी चीज़ें रखी थी. हमने उसको ऊपर टक इन करवा दिया पिन से, ताकि इवान वहाँ तक पहुँच ना पाए, क्योंकि इवान बहुत हाइपर एक्टिव किड है. He cannot sit in a place for even 5 minutes. He needs lot of attention. तो हमने सारी चीज़ें अपनी लिविंग रूम से हटा दी है, अब जब तक इवान बड़ा नहीं हो जाता. Next, very important tip, don't leave your child unattended, because these crawlers or these walkers who have just started doing, crawling and walking, they have tendency to touch everything, they have tendency to break everything. उनको सब कुछ explore करना है, तो never leave your child unattended, क्योंकि वो बहुत dangerous हो सकता है आपके लिए. So tip number 3, cleaning your floor every time. Especially Ivan is in a habit of eating everything and anything that he finds on the floor. तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे को हमेशा मॉपिंग और क्लीनिंग करना पड़ता है, अदरवाइज को कुछ भी दिखता है वो खा लेता है. एंड एक्चुअली वेरी डेंजरस, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट ही इज गेटिंग इनसाइड हिज माउथ. समटाइम्स कुछ खाने के पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन एक्चुअली चोक. सो बी वेरी केयरफुल, क्लीन करते रहो हमेशा फ्लोर को, एंड मेक श्योर नथिंग फॉल्स. अगर कुछ गिर रहा है तो जस्ट इमीडिएटली क्लीन अप. स्पेशली कुछ भी छोटी चीज़ें जो होती हैं उसको बिल्कुल हटा दो, स्पेशली स्मॉल टॉयज. ऑल दी स्मॉल टॉयज दैट कैन बी एक्चुअली डेंजरस फॉर योर किड, क्योंकि वो मुंह में डाल सकते हैं. सेकेंड, कॉइन्स आर वेरी डेंजरस गाइज. प्लीज़ कॉइन्स कभी भी इधर उधर मत रखो, उसको ऐसी जगह रखो कि आपके बच्चे पहुँच ना पाए. नेक्स्ट, कॉर्न इज अगेन अ वेरी डेंजरस थिंग. खाने में अच्छा लगता है बट बच्चे चोक कर सकते हैं. कई बच्चे नाक के अंदर डाल लेते हैं. आई स्टिल रिमेंबर माई ब्रदर व्हेन ही वाज यंग, ही यूज्ड टू डू दिस. उसने पैसे भी खाए हैं, कॉर्न भी नाक में. वेरी डेंजरस. तो प्लीज़ खा रहे हो तो एकदम क्लीन कर दो, हटा दो, बच्चे की रीच में ना पहुँच पाए ये सब चीज़ें. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. Next tip, I am sure that your kids would love chargers, be it laptop, mobile. So please, when not in use, keep those chargers away from your kids, क्योंकि अगर वो सॉकेट में लगा हो, they generally keep it inside their mouth. तो इवान करता है वो सीधे चार्जर का जो पॉइंट होता है वो मुंह में डाल लेता है. वेरी डेंजरस. सो इफ नॉट इन यूज, कीप देम अवे. सेम गोज विथ योर हेयर स्ट्रेटनर्स, ड्रायर्स. सामने मत रखो कुछ भी ऐसी चीज़ जो डेंजरस हो सकती है आपके किड के लिए. Next useful and important tip that I'm going to share is electric sockets. I know kids have this tendency to go in front of the electric sockets, और ये सारे बच्चे करते हैं, शायद हमने भी किया होगा. बट इट्स वेरी डेंजरस, बिकॉज इवान की क्या आदत थी, वो अपना फिंगर जो है इलेक्ट्रिक सॉकेट में डालने की कोशिश करता है. दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि कई बार शॉक लग सकता है अगर अनयूज है या स्विच ऑन है. तो सबसे पहली चीज़, हमेशा
switch off करके रखो if it's not in use. Second, the best thing is using this socket cover that you can easily get in Amazon. Very easy and very very useful. Actually, it is a savior for all the mothers and all the new parents. It's very easy to use. I'll show you कि आप इसको कैसे use करोगे अपने electric socket में. So let's go. It's very easy and useful. So I'll just show you how your life can be easy with using this socket covers. Just need to put it. Sorry, I am doing something wrong. And it's done. See how simple? Very useful thing, guys. You can easily get in Amazon and other online sites. So do get them for your kids. I'm sure you guys would agree on this that your kids would love going to kitchen every time, opening shelves, and also when you're cooking. So when I cook, Ivan has a tendency. So Ivan अब एक ऐसे स्टेज में है जो बहुत क्लिंकी है, बहुत ज़्यादा वो फसी हो गया है. तो मैं जब भी किचन में जाती हूँ तो ही हैज़ टू कम एंड क्योंकि मैं खाना बनाया तो कई बार डेंजरस हो जाता है क्योंकि ही स्टार्ट्स पुलिंग मी. So the best thing that I do is I make him sit in his high chair in the kitchen कि वो आराम से and give him some snacks to eat कि वो enjoy भी करता हूँ, मैं उसके सामने भी हूँ, मेरा काम भी हो जा रहा है and he is also there only. So this is again a tip that you can try. So the next important tip is about the kids who love using shelves, cupboards, and drawers. Ivan, when he started crawling, the first thing that he did was learning how to open the drawers and shelves. And I used to be so scared every time because sometimes, when he started, when he used to open it, I used to think he might get hurt, his finger might get hurt. So I got the best solution for it, and this is safety locks for the shelves and the drawers. Very very useful thing and very easy to use and very easy to use for us, but the child will never understand what is that, and I'm sure will never be able to open the drawers and shelves. So let's go. I'll show you how you can do it actually. Show you how easy it is. You can see I've already done one thing. So it just need to be sticked and nothing else. So it will look like this. Two tapes would be attached here and it's very simple. So let's start. We need to take out the from both the ends. It's just adhesive, so it could take a bit time, and you just need to actually one this side and one this side, and we're done. And see, the child will not be able to pull the shelves. So the next tip is corners or the sides of the table that you keep generally in your living area. Again, this is called a center table. Again, a very dangerous thing. So the best option that we did, हमने उसको ही हटा दिया और हमने उसके जगह पे एक राउंड शेप का टेबल लेकर आया जिसमें साइड्स नहीं होते हैं. So that is very useful for us. काम भी आ जाता है और इवान को चोट भी नहीं लगती है. So and again, online आपको कॉर्नर साइड भी मिलता है. If you want to use that, you can use that too. Guys, I love this video of mine, and especially all the new parents, you're going to thank me for sure. Please let me know in the comment box how you are loving the video or not. And those are just popped in my channel, please go and subscribe my channel first to get all the interesting videos that I create for you guys. And also please hit the like button and stay tuned for more interesting videos that I'll keep posting for you guys. And you can also follow me on my Insta page, Parenting Tales. So guys, take care, be safe.